Now, in the pure table, you have a certain thing that's happening, which is कि जब आप राइट साइड की तरफ जाते हो ना तो प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, प्रोटॉन ज्यादा होते रहते हैं। प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि जैसे ही आप राइट की तरफ मूव करते हो ना, जैसे यहाँ पे पड़ा हुआ है सोडियम, उसी की रो में आगे जाते रहो तो प्रोटॉन्स इंक्रीज होते रहेंगे। और यहाँ पे पड़ा हुआ है क्लोरीन। नाउ क्लोरीन हैज 17 प्रोटॉन, सोडियम हैज 11 प्रोटॉन्स। तो 11 प्रोटॉन्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करता, पॉजिटिव चार्ज कम है। 17 प्रोटॉन्स जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बड़ा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। तो ये वाला जो एटम होता है ना, इट्स ऑलवेज अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड इट्स ट्राइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। दूसरों के भी इलेक्ट्रॉन्स ना खींच रहा होता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये हमेशा नेगेटिव आयंस बना रहा होता है। और वो जो लेफ्ट वाला एलिमेंट है वो हमेशा उसका पॉजिटिव चार्ज कम होता है प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करता, वो बल्कि अपने भी इलेक्ट्रॉन्स ना लूज कर रहा होता है। तो ओवरऑल these ones are called metals and these ones over here they're called non-metals। ठीक है, एक साइड आपकी मेटालिक होती है, the other side is non-metallic। बेसिक आइडिया डिफरेंस ये है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ये बेसिक आइडिया। तो बेस्ड ऑन दिस we're going to try and do ionic bonding। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम राफे। राफे इसका बोर्ड का लिंक नहीं है आपके पास? नो सर। ये मैं उस पर ग्रुप पे भेज रहा हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड। नहीं, ये वाला लिंक नहीं भेजना। सर बाय द वे ये रिकॉर्डिंग हो रही है? अच्छा, so we're going to start with ionic bonding, मतलब केमिकल बॉन्डिंग पे आ रहे। अच्छा, नाउ पहले तो व्हाट इज अ बॉन्ड, ठीक है। सो अ बॉन्ड, whenever we talk about a bond is an attraction between two particles। Two or more particles which keeps them together। And always remember chemistry के अंदर it's always an electrostatic attraction, क्योंकि gravitational force तो है नहीं chemistry के अंदर। you're not talking about gravitational force, you're not talking about magnetic force, it's always electrostatic attraction। मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा। So it's always an electrostatic force of attraction। So that's what a bond is। अच्छा, how are bonds formed in ionic bonding? In ionic bonding you have a metal, and अभी हमने पढ़ा है कि मेटल जो होते हैं उनके पास प्रोटॉन्स कम होते हैं, तो वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करते। तो metals, they always tend to lose electrons and they always tend to form positive ions। Non-metals, on the other hand, they tend to gain electrons and they always tend to form negative ions। ठीक है, ये हमने पहले ही डिस्कस किया था। सो ionic bonding is going to happen between them। This is going to complete its outer shell by losing electrons। मतलब अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स ये लूज कर जाएगा। And this is going to complete
it completes its outer shell by gaining electrons. ठीक है, so you have two things happening, metals bonding with non-metals. तो सबसे पहले तो simplest example NaOCl का ले लेते हैं. ठीक है, how would they bond together? So you have Na and you have Cl. I'm going to draw the two atoms के Na जो होगा ना उसके they're going to be 3 shells. So it has 3 shells. Cl on the other hand also has a total of 3 shells. Cl के पास, हाँ Cl के पास भी, इसको थोड़ा बड़ा कर लें. Cl also has a total of 3 shells. और दोनों को एक ही साइज का कर लें तकरीबन. So you have these atoms. So in the middle there is sodium. There are 2 electrons in the first shell, 8 in the second. And the third shell only has 1 electron. On the other side you have Cl. Cl has 2 in the first shell, 8 in the second shell, and 7 electrons in the last shell. ये पता कैसा लगा हमें कि ये Cl17 था ना, 17 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? 20 प्रोटॉन से कम होगा ना, और ये हमेशा क्वेश्चन 20 प्रोटॉन से कम पे ही आएगा, तो 2, 8 और 7. और ये 11 था, 11 would be 2, 8 and 1. सही है, तो आपके पास Na और Cl आ गया. अब मैंने बताया कि जी Cl के पास 17 प्रोटॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स बड़ी स्ट्रांगली खींचता है अपनी तरफ. इट लाइक्स टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन उसके पास जगह जो है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की खाली पड़ी है, तो इट कांट गेन मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन. उसके पास जगह ही नहीं है, जगह खत्म हो जाती है. तो इफ इट पुल्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम Na, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा. बस उसे एक ही चाहिए, तो वो उसका आउटर शेल कंप्लीट हो जाएगा. एंड डोंट फॉरगेट टू राइट कि उसका जो नेट चार्ज है, बिकॉज नाउ इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स, so the net charge of the whole thing would become -1. It's going to be a -1 ion. ठीक है, it's going to gain exactly how many electrons? 1 electron. And you have Na over here. Na is not going to lose more than 1 electron. Why? Because ये जो अंदर वाले electrons है ना, ये उसका जो nucleus है strongly attract कर रहा है. So it's very hard for Na to lose those electrons. वो जो बाहर था ना, वो दूर था, वो उसने lose कर दिया. So it only loses the outer electrons. So you have and this has a charge of +1. As anyways, this is simple ionic bonding. Ionic bonding is simply going to be a force of attraction between positively charged ions and negatively charged ions. So there's going to be this force of attraction, and this force of attraction could be very strong. It depends. Most of the time it is strong. Relatively speaking, it is strong. So there's going to be an electrostatic force of attraction. Positive ions attract negative ions. So there's an electrostatic force of attraction, and positive ions, they attract negative ions. And that's how your ionic bond is completed. This is what an ionic bond is. Is this part clear to everyone? Rafa, is this clear? Hassan? Yes, sir. ठीक है, Minahil, is this clear? Minahil, can you hear us? So moving on. We're going to do other dot and cross diagrams later. What I'm also going to tell you is the structure of ionic compounds. Now, ionic compounds are basically
it's not just one sodium ion and one Cl ion. It's a huge, massive structure with lots and lots of sodium ions. But don't think of it as just one sodium ion and one Cl ions getting together, attracting each other, and that's it. What it actually is, it's called a giant ionic lattice. It's a giant structure. And what it is a regular arrangement of positive and negative ions. What that means is if there's a sodium ion, that sodium ion is going to be attracting, it's going to be attracting a Cl ion. But the story doesn't end over here. What इससे आगे क्या चलता है? इससे आगे होता है कि Cl-1 would be attracting a sodium ion. वो कहानी चलती रहती है, मतलब वो हर साइड से sodium ion को attract करेगी. इस साइड से भी it's going to attract sodium ions. Sodium ions would then attract Cl ions, and it just endlessly repeats over and over again. सोडियम आयन फिर इस साइड से अट्रैक्ट करेगा Cl-1, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, and it just continues. Sodium ions, this over here is Cl ions getting attracted to it, and you have sodium ions getting attracted, right? So there's lots and lots of positive and negative ions attracting each other, and it's going to be a crystalline lattice structure. Okay, it's going to form these large crystalline lattices. और ये थ्री डायमेंशनल, ठीक है, थ्री डायमेंशनल, ये अभी टू डायमेंशनल मैंने लेफ्ट राइट बनाया कि so everywhere sodium ions would be attracting Cl ions, Cl ions would be attracting sodium ions, and it just continues. इसकी properties क्या हैं? ठीक है, we're going to talk about the properties of ionic compounds before moving on. Some of the properties are that if you have a giant ionic lattice, some of the properties are: number one, it's definitely going to have high melting and boiling points. ठीक है, that's one very general property. But there's a huge variation. Ionic compounds are not. So when we talk about ionic compounds, it's not just they all have high melting and boiling points. I mean, and boiling points can vary. Some of them can have very high melting and boiling points. One example is, अच्छा melting और boiling point किस पे depend करेगा? Melting और boiling point depend करेगा इनकी mutual attraction के ऊपर. So how can the attraction be greater? When we talk about melting and boiling points, they have high melting and boiling points. It all depends on the force of attraction. ठीक है, depends on the force of attraction between positive and negative ions. ठीक है, so it depends a lot on the force of attraction between positive and negative ions. So if the force of attraction is stronger, the lattice would be a lot stronger. ठीक है, so तो वो किस तरह determine होती है force of attraction? Number one, कि if charge is greater, मतलब एक एग्जांपल है कि Mg2+ और O2- के जो आयंस है ना, ठीक है, if we can sort of draw this lattice, if you can think of Mg2+ attracting O2-, which is then attracting Mg2+, which is then attracting O2-, और कहानी चली जा रही है, ठीक है.
वो endlessly एक crystalline structure जो है वो repeat होता जा रहा है, ठीक है, from all sides. I mean, there's going to be Mg2 plus, then there's going to be O2 minus, and the whole thing just keeps on repeating. नहीं, यहाँ पे O2 गलत, ये Mg2 plus ही होगा. This can be O2 minus. So the structure is kind of endlessly repeating. As again, the main point was कि melting and boiling points, what does it depend on? It depends on the fact, I say it depends on the fact कि if the force of attraction between positive and negative ions बहुत ज़्यादा है अगर उनके बीच में, तो melting और boiling point भी बहुत ज़्यादा होंगे. It's going to be a very strong structure. तो चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो ये बड़ा obvious है कि attraction ज़्यादा होगी. राफिल, do you get this point? Yes, sir. ठीक है. हसान, मिनाहिल, do you get this point? Yes, sir. अच्छा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी अट्रैक्शन होगी. NaCl जो है ना वो कोई इतना स्ट्रांग नहीं होता है. NaCl तो आप हाथों में भी आप क्रश कर सकते हो. इसी तरह एक और ना बड़ा स्ट्रॉन्ग आयोनिक कंपाउंड होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड. उसमें ना एल्यूमिनियम ग्रुप 3 में होता है, उसका चार्ज +3 होता है, और ऑक्सीजन जो होता है -2 होता है. उनके बीच में भी ना बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है. तो ये मैं इधर ऐड कर दूं कि इफ द चार्ज इज ग्रेटर, और एक दूसरा पॉइंट ये, और द आयन साइज इज स्मॉलर. अच्छा, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि छोटा आयन होगा ना तो वो एक दूसरे के ज्यादा करीब होंगे और वो ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे, तो इसलिए ना वो अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी. छोटे आयन का फायदा ये होता है कि वो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं. तो इस दो चीजें हैं कि आयोनिक लैटिस स्ट्रॉन्ग कब होगा. या तो चार्ज ज्यादा हो, +2 और -2 के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगी, +3 -3 के बीच में अट्रैक्शन उससे भी ज्यादा होगी, और दूसरा कि आयन छोटे हो. बड़े आयन हमेशा वीक बॉन्ड्स बनाते हैं. ये एक यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है. मतलब ये कहीं पे भी अप्लाई कर दो कि जितना छोटा एटम होगा ना उतने वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाते हैं, वो करीब करीब होते हैं. बड़े एटम्स का मसला होता है कि उनके इर्द गिर्द इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाते हैं कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ही संभालने वो बड़ी बात होती है. मतलब वो दूसरे के जाके इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करना, मतलब खुद सोचो कि आयोडीन अगर हो, आयोडीन के ना कोई 2-3 शेल्स और हैं इसके आगे. अब आयोडीन का बेचारा न्यूक्लियस बीच में पड़ा हुआ है, बेशक उसके पास प्रोटॉन ज्यादा है, लेकिन उससे अपने इलेक्ट्रॉन नहीं संभाले जा रहे, तो वो जाके सोडियम के इलेक्ट्रॉन को किस तरह खींचेगा और अपनी तरफ लेके आएगा. तो ये हमेशा याद रखो कि बड़े एटम्स जो होते हैं ना वो बॉन्डिंग को इतनी अच्छी नहीं करते हैं, क्योंकि उनसे अपने इलेक्ट्रॉन नहीं संभाले जा रहे होते, तो वो किसी और के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाके छीनेंगे. तो रिमेंबर दिस, ऑलवेज रिमेंबर दिस कि जो स्मॉलर एटम्स होते हैं ना, दे आर क्लोजर टुगेदर. मतलब अगर मैं यहीं पे ना एग्जांपल ले लेता हूँ कि लिथियम और फ्लोरीन का कर लेते हैं, ठीक है. इसी के नीचे मैं ड्रॉ करता हूँ. इधर मैं एक सेकंड, वो प्रॉपर्टीज कर रहे हैं उस साइड पे, इधर एक बाउंड्री लगा लेते हैं. अच्छा, लिथियम और फ्लोरीन का एग्जांपल ले लेता हूँ. अब लिथियम छोटा सा एटम है, ग्रुप 1 में. उसके पास है ही, बेचारे पास टोटल 2 शेल्स हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं. तो लिथियम जो है दैट हैज 2 electrons and 1 electron. Fluorine on the other hand fluorine on the other hand has 7 electrons. ठीक है, ये फ्लोरीन है. अब इनमें भी यही होगा कि एक इलेक्ट्रॉन वो खींच लेगा, और दिस वन विल हैव one of them is going to have a positive charge, the other one is going to, जो lose कर रहा है वो positive हो जाएगा. The one that is gaining would be negative. So one of them would be plus, the other one would be minus. And both of them, they would attract each other very, very strongly.
खैर इस पूरे डायग्राम का इशू ये था कि ताकि आपको नजर आ जाए कि बड़े एटम्स जो होते हैं ना वो थोड़े एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, क्योंकि उनके शेल्स इतने ज्यादा होते हैं कि वो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है उनके बीच में। छोटे आयंस जो होते हैं ना, दे आर very tiny and they're very closely packed. If they're closely packed, तो the attraction is a lot stronger. ठीक है, वो magnets की तरह है कि magnets को दूर 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 रखोगे तो attraction इतनी नहीं होगी। अगर magnets को बिल्कुल करीब करीब रखोगे तो छोटे ions जो होते हैं हमेशा ज्यादा strongly एक दूसरे को attract करते हैं। अच्छा, is this point clear? Minal, is this clear? Rafa, is this clear? Yes, sir. अच्छा, तो 2 पॉइंट याद रखना। Yes, sir. चलो ठीक। अच्छा, इसी पे मैं थोड़ा सा वो स्ट्रेस और कर दूं कि एक मैंने थोड़ा सा उस पे MgO और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, NaCl स्ट्रांग नहीं है। NaCl तो बल्कि बहुत ही वीक है, क्योंकि NaCl में क्या होता है, NaCl में कहाँ पे गया हमारा +1 और -1 के बीच में अट्रैक्शन कितनी स्ट्रांग हो सकती है? वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग अट्रैक्शन तो नहीं होगी। तो ये जो लैटिस होगा, दिस इज नॉट गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग। हाथों के अंदर आप उसको रख के ना क्रश कर सकते हो। लेकिन आयोनिक कंपाउंड्स आर एवरीवेयर अराउंड यू, ठीक है। खाली एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं है, कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस है जो हम थोड़ी देर बाद ही पढ़ेंगे। उसमें एक कैल्शियम कार्बोनेट है, उसमें कैल्शियम 2+ होता है, कार्बोनेट 2- होता है। जैसे आपका मार्बल वगैरह, आपका आपकी वॉल्स सीमेंट की, दे ऑल कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, तो कैल्शियम के 2 आयंस होते हैं, 2+ और 2-। वन ऑफ देम इज 2-, द अदर वन इज 2+। द पॉइंट इज कि कुछ मटेरियल्स होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रांग आयोनिक कंपाउंड्स, दीज आर नोन एज सिरेमिक मटेरियल्स। इसको हटा देते हैं वैसे, फिर कैल्शियम कार्बोनेट भी नहीं, बल्कि इसको हटा ही दो। इट्स नॉट अ सिरेमिक मटेरियल। सिरेमिक मटेरियल्स आर substances that are very strong, and have very high melting points. तो इनको ना कहाँ पे यूज करते हैं? इनको यूज करते हैं फर्नेसेस के अंदर। furnaces are made from these, used in furnaces, और इस तरह की ना काफी चीजों के अंदर ना they're being used, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये फर्नेसेस के अंदर, और उसमें स्पेसशिप्स के अंदर टाइल्स लगती हैं साइडों पे to protect it from the heat when it's especially when it's re-entering. तो आपकी बल्कि ना इलेक्ट्रिकल पावर सॉकेट्स वगैरह हैं, दे आर मेड फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि ये बड़े हाई वोल्टेज जो वायर्स होती हैं उनकी जो यू मस्ट हैव सीन दीज, जहाँ पे ना वायर्स कनेक्ट होती हैं, ठीक है। सो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के अंदर यू मस्ट हैव सीन दीज होल्डर्स, आई मीन दे आर ऑल मेड फ्रॉम सिरेमिक मटेरियल्स। अक्सर इफ यू लुक एट अ ट्रांसफार्मर, उसके टॉप पे आपको नजर आएंगे उसकी सारे कनेक्शंस जो है वो सिरेमिक मटेरियल्स, वायर्स के जितने भी होल्डर्स होते हैं, दे मेड फ्रॉम सिरेमिक मटेरियल्स दैट आर वेरी स्ट्रांग। मतलब इनकी Mg2+ और O2- की अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग होती है कि आपको पता होता है कि करंट भी पास कर दो, टेम्परेचर्स भी इंक्रीज कर दो, इनकी अट्रैक्शन इतने आराम से टूटने नहीं वाली। अच्छा, इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, चलो अब एक काम करना है कि 2-3 डॉट एंड क्रॉस डायग्राम जरा पहले बनाओ, ठीक है। सेंड देम राइट नाउ। कि एक तो मिनाइल आपके साथ भेज सकते हो ये Mg एंड ऑक्सीजन, ठीक है, उसका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, जैसा मैंने ऊपर लिथियम और ऑक्सीजन का नहीं बनाया था, लिथियम और फ्लोरीन का। एंड वन मोर, एल्यूमिनियम एंड नाइट्रोजन।
ठीक है, ये दोनों जल्दी से ट्राई करो, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाओ। अच्छा, इसमें one would be 3 plus, the other one would be 3 minus. अच्छा, these were easy ones. You had equal number of electrons that were being gained and that were being lost. इसके बारे में we're going to do another example, which is when there's unequal electrons that are being lost and gained. So the whole idea is what's going to happen when unequal number of electrons are being gained and lost. For example, you have lithium. Okay, so there's lithium. Lithium is in group 1, it has 3 electrons. So 2 electrons and 1 electron. And on the other hand, you have oxygen, which is in group 6 and it has a total of, so it has a total of 6 electrons. So you have lithium and you have oxygen. Now इनके बीच में क्या होगा? अब lithium ने it's supposed to lose 1 electron, तो वो तो उसने 1 lose करना ही करना है. Oxygen is supposed to gain 2 electrons. अब इशू ये है कि lithium is only losing 1 electron, वो तो चला गया. लेकिन ऑक्सीजन को तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी चाहिए. ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से? राफे, any idea इस पे क्या होगा? What do you have to do? Okay, lithium is only losing 1 electron, but oxygen needs 2 electrons. No, sir. Minahil, any idea? अच्छा, खैर वो मैं बता देता हूँ कि where did oxygen get? अच्छा, ये याद रखना कि इसने अपना आउटर शेल लूज करना ही करना है, सारा लूज करना है. और ऑक्सीजन ने अपना आउटर शेल कंप्लीट करना ही करना है. ठीक है, ऑल ऑफ इट हैज टू बी कंप्लीट. ये नहीं हो सकता कि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हो. उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने ही करने हैं. Now the only possibility is since lithium is only losing 1 electron, so why don't you have 2 lithiums? उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. Because if you're going to have 2 lithiums, तो एक लिथियम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करा? 1. तो 2 होंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट कितने होंगे? 2. तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे. राफ, इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो ये वाले ना अनइक्वल इलेक्ट्रॉन्स गेन एंड लॉस ना, ये विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो देन. ठीक है, Okay, sir. उतनी देर बल्कि ना एक वो होमवर्क भी एल्यूमिनियम और फ्लोरीन का ना ट्राई करना. एल्यूमिनियम बॉन्डिंग विद फ्लोरीन. ठीक है, ट्राई डूइंग दिस वन. बल्कि अभी कोशिश करके ना जो भी गलत बनता है सही बनता है. हम ये अनइक्वल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कल हम फर्दर डिस्कस करेंगे. चले, ओके, टेक केयर, हाफिज. Sir.